name, buddy? Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? Are you lost? No, I'm not. My name's Ayu, and I'm here because... Hey there, Chi-Chi. Hi, Gui. What's going on? Hi, Traveler and Paimon. You've actually come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and... No, listen to me. I'm not the one who's lost. It's my dad. Your dad? How does a fully grown man manage to get lost in Liyue Harbor? Well, my dad's always been kind of forgetful. In the past, he was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more serious. So, what about your mom? She went out a few days ago to gather some herbs for my dad, but she still hasn't come back. Meanwhile, my dad's been getting worse and worse. I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Rite, so I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? When we got to the city gate, I took a moment to ask the Millelith guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone. I asked the Millelith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured, maybe I can ask some other people in the city to help. You came to the right place. We're pros at finding people. Isn't that right, Traveler? Changshan can help. She has a good sense of smell, like a dog. Hey, who's talking about me behind my back? Changshan, Chi-Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of service? You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baizhu? Uncle Baizhu? Changshan, now's not the time. My dear boy, could you tell me more about your father's condition, as much as you can recall? Yes, Dr. Baizhu. I see. And your family lives near Chingsa Village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. Uh-huh. My mom doesn't like meeting other people, especially during Lantern Rite. She always tells me to just stay at home and keep my dad company. Ayu, by any chance, is your mother's name Jiangli? Whoa, yeah, it is. Do you know my mom, Dr. Baizhu? I certainly do. Gui, Chi-Chi, are there any pressing matters in the pharmacy at the moment? Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? Don't forget us, Q. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. Chi-Chi and I need to clear up the shop front first, but once that's taken care of, we'll be right out to help you with the search. Family is very important. Thank you. Then I'll leave you to handle the pharmacy. Traveler, Paimon, why don't you come with me and Ayu? Let's start by talking to the Millelith guards at the city gates, see if they have an update.
searched to the north, but couldn't find anyone who matched the description. Well, that complicates things. The city folks say there's no sign of him either. We need to start looking further afield. But where are we gonna get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Ah, hey there, buddy. Dr. Baizhu. What brings you out this way? The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on? Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. As for updates, I'm sorry to say that we've searched the surrounding area thoroughly, but didn't find anything. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Guili Plains. But it is possible that he was bound for Luhua Pool. Luhua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. You will? Oh, great. We can't thank you enough. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you for trying. I see everything. Dad! Dad, can you hear me? There's somebody over there. Oh no. It's... Hey, you! Stop! Don't go any further! Watch where you're going! Dear customer, Wangsheng Funeral Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. Are you all right? Huh? Dad! Hey, Hotel! My, who do we have here? It's the Traveler in Paimon, and my worst nightmare. I see she still hasn't warmed to you. Thank you, Director Who, for saving this man. Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. Are you? Who am I? Your name is Jiao Liang, and you live just west of Qingse Village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Remember? Does that jog your memory? Oh, my name is Jia Liang. Liyue Harbor. See the doctor? Yes, I'm Jia Liang, and I need to see the doctor. Wait, why do I need to see the doctor? Uh-oh. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away. Sorry, Hotel. Gotta dash. Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Huh? Why not? What's the problem? Come on, Baizhu. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. There are traces of god remains in Jia Liang's system.
Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. I'm sorry. What? God remains? There's no need to worry, Director Who. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? Now you're bringing my great-uncle into this? Baizhu, just what are you planning this time? Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. Hello there. Okay, deal. We're not gonna solve anything by keeping Jialiang here. I'm happy to do it your way, but only for my great-uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. Did wall 5? हाँ मैंने wall 5 कर दिया. मुझे wall 6 करना है. मैं सोच रहा हूँ wall 6 कल करूँगा. Blockages within the cardiovascular system, reduced blood flow and energy circulation? I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. Dr. Baizhu, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baizhu's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baizhu? Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. 5 was Kafka, right? Yes, Kafka. Kafka का एक के attack है domination. वो वाला यार बहुत थोड़ा सा dangerous है, तो अगर करोगे तो थोड़ा संभाल के उसको देखना. अगर तुम्हारे पास नताशा है ना, तो मैं बोलूँगा तुम नताशा की यूज़ करो. नताशा का एक टैलेंट है, पैसिव टैलेंट, ठीक है, मतलब जो कि अगर तुम उसको उस कैरेक्टर को हील करोगे ना, तो जो डोमिनेशन वाला जो है ना, वो मतलब चला जाए, मतलब उसको जो भी है वो चला जाता है. क्या बोलते हैं, मेरे नाम भूल गया. No, I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. Thank you, Dr. Baizhu. Thank you so much. If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus when treating a patient. Any distractions heighten the risk of complications. Yes, of course, absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that something's amiss. See you tomorrow, Baizhu and Chung. Bye for now, everyone. Are you ready, Baizhu? Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. Paimon's kind of curious after hearing Baizhu mention those people from his past.
curious too, right? Let's go see what we can find out while Baizhu's busy treating Ayu's dad. Idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've got some questions for me. Guilty as charged. So, we were just a little curious about Baizhu's master. What was he like? Oh, and also, how come you and Baizhu could tell so quickly that Jialiang had God remains in his system? Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. Well, it is a dusty old tale by this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up, so our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify gods' remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baizhu learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baizhu's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. Wow, fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baizhu's master? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chen Yu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chen Yu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again. Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit extreme. If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chen Yu Vale tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics. And you've seen how wary Baizhu is around me. He'd never tell me anything. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baizhu is that he's obsessed with the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. After all that, it seems like you have more questions.
remember me? Yes, I remember now. Oh, I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while, hasn't she? Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baizhu's gonna help too. Right now, all you need to do is concentrate on getting better. Great. That's wonderful. I can't thank you enough, Dr. Baizhu. My pleasure, really. It's the least I can do to honor my late master's dying wish. If anything, I should be apologizing to you for not making the time to visit in all these years. Not at all, Dr. Baizhu. It's only because Jiang Li... What was her reason again? You're still in the early stages of recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert yourself. I suggest you stay at Boo Boo Pharmacy and rest for at least the next few days. Director Hu, do you have any further reservations about Jia Liang's condition? It seems like the evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you wish. Though I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wangsheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Oh, come on, Baizhu. I'm not that unreasonable. I've been stuck indoors for too long. Baizhu, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Yes, of course. Everyone, please excuse Changsheng and myself for a moment. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by now. But in any case, why must you keep this a secret from everybody? You should at least share your secret with one person you trust. Who's there? Why did you follow us here? Oh, it's nothing. I just needed to get some air. What did I just say about putting on a brave face? Yes, Traveler, Paiman, the truth is, Baizhu did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. Baizhu, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jia Liang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jia Liang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limited time. Changsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baizhu's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I was treating patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin.
Please, that's enough. Wait a sec. Hotel is saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Jiangsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baiju's life force is not unlimited. He must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body. And soon. Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Baizhu, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. Entire life. Thank you, Traveler and Paimon. Huh. Paimon doesn't think we've seen this side of you. But there's no need to thank us. You've helped us out before. The poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Yes, I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jia Liang's exposure to the poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple, Jiang Li. Before. Nor have I. And I've hosted clinics at Qingsa village many times in the past. If you ask me, Jiang Li was trying to remain unnoticed. Oh, that reminds Paimon. We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiang Li? You said she was your fellow disciple, right? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. Wait, Changxiang, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before all of this? Jiang Li did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and Master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What happened?
I don't know. I did not witness the argument myself. Nor did Master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Jiangli or her family in the future, I should do everything in my power to help them. Oh, so that's why you went to such extreme lengths to help Jialiang. No. Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. Paimon never knew you were so selfless, Baizhu. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. So a few words from me is enough to dispel all your suspicions? You ought not be quite so quick to relax your guard, Paimon. Sometimes even the good guys have their own private agenda. What the... Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said. Let's leave the idle chatter there for now. Jiangli has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. Let's split up. But if anyone finds anything, we'll examine it together. Traveler, Paimon, come quick! What is this? Changsheng and I found a hidden compartment. This is what was hidden inside. You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it? Breathing? Paimon's not seeing things, is she? No, your eyes do not deceive you. I do believe the poison in this bottle is alive. Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of poisons consists of mother and minor loads, capable of sustaining a connection over vast distances. If it's a concoction of this kind we're dealing with, then both the poison in Jialiang's system and this one here are likely minor loads. Offshoots, essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear, to a varying extent, the call of the source. The call of the... Wait. So, back when Jialiang ran off, maybe that explains where he was heading! Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient, the mother lode. This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jialiang? Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. You mean Jialiang? Why would he poison himself? Think a little harder, Paimon. Someone else who lives here. Hello, and who might Caesar. have expertise in crafting drugs. Huh? So you're saying... it was Jiangli? Wait, but... that doesn't make any sense either! Why would she poison her own husband? वॉल 4 हो गया मेरा। ओह अच्छा है, जाके वॉल 5 करो। पूरा प्रिजर्वेशन से किया। I agree. It makes little sense.
Jiangli does not strike me as the kind of person who would do such a thing. Wall 5 करोगे नहीं? Look at the facts, though. How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from god remains? It's too early to draw any conclusions. We should question Jia Liang about it once he has made more progress in his बस थोड़ा recovery. lyrics upgrade करना है. अच्छा इसके बाद फिर हो गया. नेक्स्ट क्या करूँगा शायद. क्यों? आज ही कर लो ना. क्या हो रहा है? 5-6 कर लो. वरना वो एक्सपी वेस्ट जाता है. हाँ नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो एक्सपी तुम फिर से वो कर सकते हो. Yes. According to the origins and symptoms of diseases, the minor loads will disappear if the mother load is purged. So if we can find and destroy the source of these god remains, the poison will leave Jialiang's system without the need for any further treatment. Do you know anything about god remains in Qingsa village? Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around here since the beginning of time. Didn't you used to be on good terms with the Adepti, though? You sure they didn't tell you anything about this? Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by अब now. बस एक इमेजिनरी कैरेक्टर चाहिए कपका के लिए. वेल्ट अच्छा है. मुझे तो कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं चाहिए था. नहीं सॉरी, मुझे तो कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं लगा. After a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. hey! Plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. का कुछ पता चला. ब्रेक, हाँ ब्रेक इफेक्ट. तुम्हारे पास जितना ब्रेक इफेक्ट रहेगा ना, वो जब एनिमी का वो जो टफनेस ब्रेक होता है ना, टफनेस ब्रेक होने के बाद एक डॉट डैमेज आता है. देखो जब वो ब्रेक होने के बाद ना एक और एक्स्ट्रा डैमेज मिलता है उसको. ठीक है, तो तुम्हारे पास जितना ब्रेक इफेक्ट रहेगा ना, तो वो टफनेस ब्रेक होने के बाद उसका डैमेज और ज़्यादा इंक्रीज होगा. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. Stronger and healthier? Wow, that's amazing! आज 1080p स्ट्रीम. 1080p में पहले भी करता, लेकिन मेरा पता नहीं वाईफाई का कभी कभी यार कुछ नखरे चलता रहता है. Baizhu, maybe when you retire, you can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. few days के लिए contract. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Temperament? Hey! What are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? लो Genshin, yep, Genshin भी तो खेला पता है ना थोड़ा बहुत. Ugh! Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baizhu, you're Mannequin Man! Changsheng, you're just a pain in the neck! Pain in the neck. This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? MBL या फिर MBI
मैं समझा नहीं। मोबाइल पे खेल रहे हो? हाँ मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ। ये जब मोबाइल की बात कर रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आया ठीक से। With how antisocial they are, if it were up to them, they'd go their whole lives without showing their faces to the common folk. तुमने अभी नोटिस किया क्या ईशान? What? ईशान ने अभी नोटिस किया कि मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ। Seems you're as well डिवाइस कौन सा connected है? as they say, traveler. We are truly डिवाइस है fortunate to Redmi have you Note on 10 our Pro। side. अरे मेरा पुराना वाला एक डिवाइस था, मैंने तो लिया था गेम खेलने के लिए बस। पोको X3 Pro लिया था मैंने। वो फ़ोन तो डेड हो गया था, 10 महीने यूज़ किया था। सर्विस सेंटर पे दिया था तो उन्होंने बोला कि ये तो रिपेयर नहीं होगा। कंपनी वाले ने इसका पार्ट्स वगैरह बनाना बंद कर दिया। You called? इसलिए मुझे शाव बिल बहुत पसंद है यार। Gets Paimon every time. Aren't all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. Huh? It's you. शाव Baizhu of Boo Boo Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. The Lantern Rite, when we met briefly, I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? कैसे आता है? हाँ उसने लिटरली ट्रैवलर से प्रॉमिस किया था ना, अगर लिटरली उसका कभी भी उसको हेल्प चाहिए ना, बस उसका नाम एक बार ऐसे बोले शाव बोल के पुकारेगा तो आ जाएगा। मैं क्वेस्ट करके आया। कौन सा क्वेस्ट? Our paths have crossed once before. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Jinxa village. A vile monster known as the Chu once wrought havoc over this land, before it was subdued by Rex Lapis. पहले खेलता था। अब क्या हो गया? The land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Jinxa village was founded some time after that. The seal is still mostly intact. If the Chu is the source, then it must be some of its blood leaking from deep underground. However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. I do not like to intervene against mortals unless absolutely necessary. iPhone पर फिर बैटरी 100 से 8 हो या 5 15 But when demonic iPhone forces कौन सा are है? involved, Model. things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my name again. ईशान ब्रो यार बहुत अमीर है और रिच है। रिची Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but immortality may not be the blessing that you imagine it to be. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Farewell. भाई दूसरा आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता इसीलिए हाँ एक किडनी तो चाहिए। What a strange Adeptus. Rather different from the way I remember them.
भाई मेरे से एंड्रॉइड नहीं खरीद, मुझे एंड्रॉइड खरीदने के लिए पैसा नहीं है। That's show for ya. Thanks to him, we finally got some concrete info to go off of. वन तो ऐसे इसी 13 लेने में क्या? If the goblins are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb-gathering trips. If we can find the cave... Master, there's a problem. Gwei? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? ज्ञानियों में था पहले। ओ ज्ञानियों मुझे पसंद नहीं है, उसका प्ले स्टाइल यार बहुत बोरिंग है। Just catch your breath and tell me everything. It's Jiaoliang. He was fine one minute and then he suddenly took a turn for the worse. Already? How? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, back to Boo Boo Pharmacy now. उसका वो लेग्स मत देखो यार, मत देखो। ज्ञानी बस देखने में अच्छा है, उसका प्ले स्टाइल बहुत बोरिंग है। डैमेज अच्छा है, मैं नहीं बोल ऐसा नहीं बोल रहा कि ज्ञानी बुरा है। ज्ञानी वो बहुत अच्छा DPS है, बट उसका जो प्ले स्टाइल है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, बहुत बोरिंग। और एक्चुअली में मुझे वो कैरेक्टर तो और भी पसंद नहीं है, और वैसे बोरिंग मुझे और भी पसंद नहीं है। पर 60 के प्लस डैमेज, 60 के नहीं उससे भी ज़्यादा जाता है, 100 के प्लस भी डैमेज जाता है। बात वो नहीं है, बात है कि भाई बोरिंग गेम प्ले, वही बात है। जाते हैं। Dad, what's wrong? Dad? Don't be scared. Dr. Baizhu will be back soon. How is he doing? Dr. Baizhu, you're back! My dad was doing fine earlier, but then he suddenly started coughing up blood. Now he can't even get a full word out anymore. चीची वर्स्ट 5 स्टार, सबसे बेकार 5 स्टार है नीलो। When Gwei left, he was still conscious, but now... नाइडा निकाल लिया। अरे मुझे नाइडा सेटो चाहिए था। मान लकी पर्सन यार, क्या बताऊँ। C1 मिला। Please take Jiaoliang to the back room and prepare for treatment. नाइडा भी ब्रोकन, हाँ नाइडा बहुत अच्छा है। Yes, of course. मुझे उसका सेटो चाहिए था। सुना था, तुमने सुना था, उसका गेम प्ले नहीं देखा? I will cure your father. Baizhu's not gonna use Changsheng's secret art again, is he? There's no other way to save... हाँ, तुम्हारा ये वाला वर्ड ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक्चुअली में बोलना क्या चाहते हो। ठीक है, तो सेटिंग में क्या जाए। तो अभी क्या, अभी बस एक्स्ट्रा खेल लो। How are you feeling, Dad? Are you still hurting anywhere? You're not gonna suddenly collapse again, are you? Much better, Ayu. I'm feeling much better. In fact, I can't explain it, but somehow I feel even better than usual. Wait, where's Dr. Baizhu? I still haven't had a chance to thank him. Genshin पे एक Before I लड़की came थी। too. Genshin पे एक नहीं, बहुत लड़की है।
Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be गेम resting. पे बहुत हेल्प किया. किसकी बात कर रहे हो, Zane? Oh, really? Well, he must 4 be star tired या from 5 treating star? me for 2 nights in a row. शादी करने का मन तो कर लो ना यार, कौन मना कर रहा है? लिटरली हर कोई अपना अपना नाम चेंज करके रखा है, बताए. I'll have to एक है discuss my आयका's problem with husband, Jiangli once we find her. एक है काफका का हस्बैंड. आएगा, पता नहीं कब आएगा, कभी भी आ Has सकता there है. been any word of her whereabouts yet? कैसे ओ असली लड़की. No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me मैं yet. उसके बारे में I'll नो go check with them कमेंट again in a bit. कुछ नहीं बात कर सकता. I'll come with. Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet, Jialiang. I strongly suggest that you stay and rest at Boo Pharmacy for now. I can accompany Ayu to the Adventurers Guild. क्या ही जीती कभी ऐसे डायरेक्ट कॉल करके बात की. I'll have to rely on you. Though, on the bright side, this means I can thank Dr. Baizhu in person once he's finished resting. Traveler, Baizhu hasn't shown his face ever since he... Huh? Hey, wait up! वही तो ABID मांगा, भूल गया, मांगना भूल गया. तो अभी जाके मांग लो ना. अरे मेरा जेंशिन में एक फ्रेंड है, ठीक है. मुझे बोल रहा है कि भाई एक लड़की का आईडी दे रहा हूँ, उससे बात करो. छोड़ो यार. You're finally awake? वो किधर? That was far too risky. Even with me here to help you balance your chi. There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. I managed to learn something. Jiangli's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas, if only there wasn't a catch. Hello, happy bye. So, how much longer do you think Baizhu's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Should we at goodbye least बोलने go आया हूँ. and show our faces? किससे? जेंशिन से? All right. जेंशिन सो रहा है. जेंशिन छोड़ रहा है. और एटलीस्ट यार वेलकिन मोड कलेक्ट कर लेते हैं. वो बोला प्राइमस तुम्हारे इस पे अकाउंट पे रह जाता. बस डेली लॉगिंग ही तो करना था, तो कलेक्ट हो जाता. अगर फ्यूचर में जब अगर तुम कभी आओगे ना, तो उस टाइम तो तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करेगा. Surely he hasn't. There's no way he could have just... Who's talking behind our backs again? Ah! Baizhu! Changsheng! Of course. There's no need to be concerned. I merely had to transfer a rather large amount of life force on this occasion. But, with Changsheng's help, I will recover in time. Xiaoliang seemed fine yesterday. मुझे Why पता do we है, need more जब life-saving जेंशिन treatment बेटा में against था ना, Monsoon? तब से मैं उसे खेलना चाहता था. ठीक है, तो अब Made an लिमिटेड error in my initial diagnosis. लिमिटेड से ऊपर Jialiang is in चला fact गया. suffering from more than हाँ, one मैं ailment. समझ रहा हूँ. तो मैं And as a मेरा result, थोड़ा स्टोरी his life बताता हूँ. force depleted at a greater rate than I had anticipated. जब जेंशिन बेटा में था तब से मुझे पता था You mean, जेंशिन के बारे में. ठीक Even है? if you got all the तो poison out मुझे of him, बहुत मानता he'd जेंशिन still be करने का. sick? तो
और उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन था एक वीवो का फ़ोन था 2 GB रैम, ठीक है 2 GB रैम वाला फ़ोन था और 16 GB फ़ोन मेमोरी था, जिसमें से मुझे कितना 6-7 GB मुझे मिलता था फ़ोन मेमोरी, ठीक है। मुझे लिटरली 50% भी मुझे स्टोरेज नहीं मिलता था। तो उसमें मैं PUBG वगैरह खेलता था, वो भी कितना 20-24 FPS ऐसा कुछ समथिंग। Though it was created from God remains, this formula is not वैसे तो बहुत टाइम तक चला लिटरली, जब से PUBG मैं सीजन 2 से PUBG खेलना चालू किया था, तो बैन होने के बाद उससे मूड खराब हो गया। ऊपर से घर वालों से आज झगड़ा हो गया। किस बात से? Had he not taken it all these years, he likely would have died a long time ago. Still, using poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. As time passed, and the poison accumulated in his उसके system, बाद जेंशिन आने it के began to impact his cognition. 6-7 महीने बाद मुझे फ़ोन लेना था, क्योंकि वो फ़ोन मेरे से लिटरली चल ही नहीं रहा था, उसका डिस्प्ले वगैरह ख़राब हो गया था, फ़ोन भी लिटरली चल नहीं रहा था। ऐसा समझ लो फ़ोन ऑलमोस्ट डेड था। ever greater quantities to ensure its continued efficacy, or he could have still perished at any moment. हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम बोलना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम अपने साथ बीच में रखो। हाँ इसे देखो, तुम्हारा फैमिली है, मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। That explains why Ayu said his dad has been getting worse, and why his mom went off to gather herbs. बात क्या है पता है, एक चीज़ बताओ, तुम और हमारे जैसे फैमिली में ना, तो मॉम डैड ना हमारा कभी ऐसी समझेगा नहीं, ठीक है, कि मतलब फ़ोन कंप्यूटर, ठीक है, ये चीज़ कभी समझेगा नहीं। तो अगर तुम उनसे झगड़ा करोगे ना तो बेकार है, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, अगर खास करके अगर तुम्हें फ़ोन या PC वगैरह चाहिए तो। God remains are extremely तो dangerous to be अगर around. तुम्हें एक फ़ोन दे देगा ना तो बोलेगा कि वो तो चल रहा है, उसमें तो तुम गाना वगैरह वीडियो वगैरह चल रहा है और क्या चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। और अगर ठीक है, और एक्चुअली वो कभी समझेगा ही नहीं कि मतलब क्यों चाहिए तुम्हें। और अगर तुम कभी बोलोगे कि मुझे गेम खेलने के लिए फ़ोन चाहिए, तब तक भूल ही जाओगे, तब तक फ़ोन मिलने की जगह ऐसे जूते मिलेगा। I fear that the situation is just as that Adeptus described. मैंने तो कभी In an effort to save अपने घर वालों को मैंने कभी Jiang बोला नहीं कि मुझे Jiang फ़ोन Li has वगैरह कभी चाहिए। abandoned all regard for her तो own मैंने जब safety. पढ़ाई छोड़ दिया उसके बाद मैंने खुद से मैं काम करने लगा था, तो उसके बाद मैंने खुद से मेरा सब कुछ मैंने लिया फ़ोन वगैरह। Perhaps this is the inevitable course of fate. To sacrifice और मुझे one's own गेमिंग life to पे save गेम others. खेलने के लिए ना लिटरली मुझे बचपन से मुझे उसका गेम का शौक है। जब नोकिया का ब्लैक एंड व्हाइट वाला फ़ोन आता था ना, याद है, जो कि लिटरली वो हिलेचर्स का शील्ड जैसे स्ट्रॉन्ग वाला फ़ोन, तो उस फ़ोन में जो स्नेक गेम आता था लिटरली मैं दिन रात पूरा खेलता था वो फ़ोन पे मेरे घर So our immediate priority should be to get ourselves back to Qingsa village and find out where Jiang Li is. Her regular exposure to God remains over such a long period will have उस फ़ोन में been लिटरली catastrophic मेरा for her बहुत health. मेमोरी है, मैंने उस पे बहुत स्नेक गेम खेला है। And given that she's already been missing for several days, I am fearing the worst. It's me. मेरे पापा Traveler, चलाता है Dr. नोकिया Baizhu. का फ़ोन। हाँ वही तो ना, वही तो। देखो तुम कभी भी अगर तुम बोलोगे ना तो समझेगा नहीं, तो उनको ना मैं एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ कैसे तुम्हें ऐसे कन्विंस करना है। तुम अभी कौन से क्लास पे, ऐसे तुम बोल सकते हो कि देखो अगर मैं क्लास पे ऐसे में अगर एग्ज़ाम में पास हो गया तो मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसा कुछ मतलब तुम उनको कन्विंस कर सकते हो। नोकिया स्क्रीन टच नहीं, नोकिया वो वाला वो अपना ऐसे लिटरली हम ना उससे वो पेड़ से आम वगैरह तोड़ते थे, ऐसे जाते थे दोस्तों को लेके फ़ोन से। और लेचर्स का शील्ड है।
नोकिया को ब्लैक एंड व्हाइट बोला। Dr. Baizhu, please let me come with you. You've already done so much for my family. I can no longer just sit here and watch while you put yourself at risk for Jiangli's sake. After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I won't be of much help in battle, but at the very least, I can show you the way. तुम्हारे फादर को ऐसे कन्विंस कर सकते हो। हाँ, बोर नहीं हो रहे हो क्या? बोर तो मैं हो रहा हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ, तुम वही बात है, इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ। Be careful. If you get too agitated. No! Before I forget. This trip will. I never expected हैप्पी, to live जो this मैं long बोल in रहा हूँ ना, this वो चीज़ place. एक बार तुम अपने My death is already long overdue. So why should I fear it? जेंशिन पे बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया, मुझे There's स्टोरी only कर one thing रहा I fear now. Very well. होटाओ, उधर पे होटाओ था ना? I'm sure होटाओ था उधर पे, 101% sure. Dr. Baizhu, are you heading out again? ओके, हैप्पी, तुम अपने फादर से ना, अगर उनका कभी मूड ऐसा देखे ना कि उनका मूड थोड़ा सा आज ठीक है, तो उनसे जाओ, बात करो, ठीक है? तो बात करो, बोलो कि देखो, अगर जैसे अगर तुम्हारा एग्ज़ाम वगैरह आता है ना, तो उनको बोलो कि मैं अगर एग्ज़ाम में ऐसा पास हो गया ना, तो क्लास 6 से क्लास 12 पे आ गया हूँ, बट अभी तक एक साइकिल नहीं ले पाया। उनको बोलना चाहिए, ऐसे कन्विंस करना चाहिए। This could be a long one. Could you please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen and one dose of each of the ingredients from the third and... Doctor... Hop to it now. And Okay. वही तो प्रॉब्लम है ना हमारे जैसे मेरे का। लिटरली तुम ना, उन्हें कन्विंस करना ना थोड़ा सा हार्ड रहता है। आई ऑलरेडी लॉस माई होप। हाँ नहीं, देखो मुझे भी ना स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मैं अपने मम्मी को अगर कुछ बोलूँगा तो समझेगा नहीं, ऐसा मुझे भी लगता था। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि भाई तुम्हारी बात जरूर समझेगा, मुझे पता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हो कि तुम उल्टा सीधा हरकतें करो, ठीक है? उन्हें बोलो तो ऐसा मत बोलो कि मुझे नया चाहिए, मैं बोलूँगा सेकंड हैंड ले लो, ठीक है? अभी ना लिटरली तुम 6,000 ज़्यादा नहीं, अगर तुम 6,000 रुपये में भी अगर तुम सेकंड हैंड फ़ोन लोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा फ़ोन मिल जाएगा एंड्रॉयड का, ठीक है? जिससे तुम आराम से बहुत अच्छा जेनशिन वगैरह सब कुछ आराम से चलेगा तुम्हारा। तो तुम्हें लिटरली थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा ऐसे बोल के। सबसे मैं अगर तुम्हारा पापा नहीं सुन रहे ना, माँ से जाकर, तुम्हारे मॉम से जाके बात करो भाई, उनको अगर तुम कन्विंस कर पाए ना, तब तो तुम्हारा हो जाएगा। ये फ़ोन थोड़ी नया था, ये भी सेकंड हैंड था। ये कितने का था? ये वाला क्वेश्चन के बाद बस लास्ट वाला पार्ट बाकी है। हाँ 5K में लिया था। ओके, तो अभी और अभी कितना टाइम पहले रेडमी नोट 5? ओके, वही तो अभी लिटरली तुम अगर उससे अगर 1,000 और ज़्यादा ऐड करोगे ना, लिटरली तुम्हें अभी सेकंड हैंड बहुत अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। क्योंकि
मैंने लिटरली मेरे पास मैंने 4000 में Redmi Note 5 Pro लिया है 4000 में सेकंड हैंड. That strange feeling is... It's just like the day I went missing. The Motherlode's influence is growing stronger. Jialiang, can you sense which direction... I think it's... this way. तो मैं बोलूँगा अपने डैड को कन्विंस करने से पहले ना अपने मॉम को कन्विंस करो उनसे जाके बात करो आराम से बोलो ऐसा ऐसा अब जा रहा है मैं देखने पास में अगर फोन चाहिए ना ईशान से ले लो ईशान के पास 13 है आईफोन उससे मांग लो यार उधार पे और उसके पास एक किडनी और ज़्यादा है और कौन से एनीमे देखने जा रहे हो? I feel a dull ache in my heart. This must be the way. बाइक खुद कमाना This place feels familiar. दूसरे से होप नहीं I think रखता I've मैं been here before. मैं अभी 12 खत्म हो गया खुद There is an inauspicious presence here. Even I can sense it. I think I remember this place. ईशान भाई अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी मैं बस मजाक कर रहा था ठीक है सो दिल पे मत लेना Are you okay? No. I... क्योंकि मुझे पता है कि भाई कैसा फील होता है ठीक है क्योंकि एक टाइम मैंने भी वो चीज़ मैंने वो किया फिर जियो नहीं है ना वो तो थोड़ा बोल रहा था टट्टे इसको स्कॉलरशिप वो नहीं मिलता अभी ना हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ना बहुत लिटरली बता रहा बहुत घटिया है This place gives Paimon the creeps. Who knows what we're gonna find up ahead? The digging marks here appear amateur and rather old. I suspect it is a thieves' tunnel. अभी तुम अपने समर की छुट्टी में तुमने क्या किया अभी भी समर का छुट्टी है क्या Thieves' tunnel? Judging by the tool, but why did they abandon this place? I remember now. She took me here once and but she said that the... Easy, Jialiang. See today, Baizhu. However, यार ये आर्टिफैक्ट तो यार पूरा हो सके एटलीस्ट इस आर्टिफैक्ट को तो यार चेंज करो एटलीस्ट 4 पीस डिबूट दे देते हैं कौन लेवल देख एटलीस्ट वो वाला आर्टिफैक्ट तो चेंज कर देते हैं यार Bitter pill to swallow. The doctor was... Mind the side effects. Whoa.
teleporters sure made themselves at home. क्या है ये डॉक्टर या जादूगर डॉक्टर है I believe this sensor was used to burn a monster repel. A monster repelling incense? The incense was burned no doubt an encounter after them. That's right. This is what... Jiao I'm fine. Let's keep going. एमिनेंस इन द शैडो देख लिया निशान लग रहा है सूर्य से मरेगा तो कहाँ जाते मर भी सकता है उसमें क्या बड़ी बात है कितना अंडरग्राउंड जाएगा Shadow Garden. Yup. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... Atomy. Yep. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. Okay. एक्टिव करने पे क्या होगा It's puzzle time. Activate. खुल जा सिम सिम Taking a turn for the better. मर गया इतना वीक है I see everything. I'm so sorry. न्यू सीजन कब आएगा न्यू सीजन पता नहीं न्यू सीजन कब आएगा अच्छे से स्ट्रीम करना बाद में होगा हाँ ठीक है आ जाना कभी भी पुश पुश एक मिनट हाँ इधर पे तो बता रहा है मैं इधर पे क्या हो रहा है ओके हाँ मैं भी पहुंच चुका हूँ
नो नो, मुझे ऊपर जाना। ये क्या है? Jiangli! Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. To oblivion! Dr. Baizhu, how serious is it? I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Then, what are we waiting for? It's not as simple as that. Don't you remember what Baizhu said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. If the source is purged, the poison in his system... and the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition and... Oh no. Indeed. If the god... I wondered when this day might come. Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang's life! After all that, Baizhu, you're a great... You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiangli, maybe if we put our heads together, we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it and live. Dr. Baizhu, give it to me straight. How long does Jiangli... The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances... But Dr. Baizhu, if I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiang... I know for a fact that if my choice can bring Jiangli back... Jialiang... After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry. Jialiang... I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humans. Mortals are What a crazy situation! Jiangli risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice. I've seen many final... In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those, I cannot help but think that when all this began... I've said my goodbyes. As you wish. It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch how you grow up. Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now?
The longer we live... Oh, how I would love to hear... Jialiang! Jialiang! Dad! Didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baizhu, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie? That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jialiang's iron will. In the end, I am mere... All I know is that and even this would have counted for nothing. Oops. And... Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiang Li in time. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Director Hu told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baizhu's attention. Never underestimate us. All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the... One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad! When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baizhu. Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng funeral parlor out of business. If you're... Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Is she finally gone? All's well that ends well. If you ask Paimon. It feels like it was a whole lifetime ago. Yay, Paimon! Alright, first thing... Oh, wait up! I'll come tip! Baizhu, thank you. Don't mention it, Jiang Li. Just your duty. Now that you are part zombie, there are some rules that you need to know. Yes. First, don't forget to stretch your body regularly. Yes?
Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changshang, you're the same as ever. You haven't changed one bit. Jialiang! 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 Dad! Didn't I... How does it feel to come back to life? Do you feel strange? Dr. Baizhu. That's right. Of course. Whether it will keep you... But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes. An elixir of immortality? How'd you cook that up? It's a work in progress that hardly lives up to its name. And it would have had no... In the end, all I know is that if I'm... And even... Oops. Without Director Who nudging things in the right direction... No wonder he didn't... All I wanted was... Leave it to Boo Boo. One Chi-Chi was an... You stay away from my dad! Oh, is that right? Traveler, Paimon, I'll catch you up. Is she finally gone? All's well that ends well. If you ask It feels like it was a whole lifetime ago when I last... Yay! Paimon! Alright, first... Oh, wait up! I'll come to... Baizhu, Don't mention it, Gia. just your duty, huh? Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changshang, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baizhu. A bitter pill to swallow. I've taken a look at your elixir of immortality. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poet... No, not at all. But I'm not just Baizhu. Huh. Life force isn't... Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. When I treat it, there is no need to worry about any long-term consequences. But you took such... The reason I left our master. But in the end, are all disciples of Chenyu... We are Baizhu, I can... Can you still stop before it's too late? I think you know the answer, Jiangli. Every one of us from Chenyu Vale believes in the same thing. Hey! Food's ready! Mom! Come and join us! The Traveler taught... Yes, darling. Mom will be there in just a second. Baizhu, Chi-Chi, Gui, and all... There's no need to worry.
Baizhu, what did Jiang Li mean by not around anymore? Are you gonna be okay? Every single mortal I've ever contracted with, including Baizhu and Jiang Li's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't... Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Genshin UID who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors, and followed it myself unquestioningly. That is, until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poisoned chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojin. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart.
But when one with an altruist, though they know better, they are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope. So, I suppose that would make me a Changsheng's. I have nothing but the utmost respect. Huh? But didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison poison? And what makes a disease? If disease is defined as, many may view the notion of, I don't want those who come after me to lose their... Precisely. I will be Changsheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. For a selfish moth like me... Huh. Dr. Baizhu, Traveler, what are you... We also have coconut milk for Changsheng and Paimon. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the... Follow the wind. Time to go. Follow the wind.
fallen leaves. Adorn my night! Everyone hold hands! Inazuma shines eternal! I see everything! Hey! Add Thank you for Add Time to go. Everyone hold hands! Hey! I see everything!
follow the wind. Time to go. No escape! Everyone hold hands! Whoa! Sharing my knowledge! This may hurt a little. Clouds high. The birds call! Don't be scared! Ready, go! Absurd! Now you shall perish! Shine down! Shattered! I see everything! Wind strike! You, Blade! You're up! Everyone hold hands! Make Your yourselves verdict is at home! decided. One with wind and cloud! Wind strike! Inazuma shines eternal! This bond is eternal! There is no escape! Purge all obstacles! Inferior! Sharing my There is knowledge! no escape! Hey! Faster! Real fast! Stay put! Purge all obstacles! Clouds high. The birds call! Hey! Go away! Witness the final illusion shattered! Everyone hold hands! Perish!
Don't be scared. Shine down. Eternity. I see everything. In my hand. Illusion shattered. किस पे पुल करूं? Stay put. As one with wind and cloud. Make yourself a home. Everyone hold hands. Torn to oblivion. Euthymia crumbles before me. बाइजू पे पुल करने के लिए बोल रहे हो क्या? There is no escape. Bow before me, worm. I see everything. Sure. Temple of Wisdom. Don't be scared. Commit to memory. Inazuma shines eternal. Illusion shut. Hey, share my knowledge. You, Glay, you're up. Now you shall perish. At my There is no command, escape. you shall fall. Shine down. Feeble human. Ready, go! There is no escape. 1,000 eons, mine to dominate. Burn to oblivion.
nature. That hurts. Don't be scared! Reality is pain. Time to go. Illusion shattered. To oblivion. Stay put! Shine down. Kneel. Good riddance, cruel world. Clouds high, the birds call. Don't be scared! Possible. There's no escape. Everyone hold hands! Make yourselves at home! Fallen leaves, adorn my night. Torn to oblivion. I was destined for. Shine down. I see everything! Grow, grow, grow! Share my knowledge! As one with wind and cloud. Inazuma shines eternal. Stay put! Everyone hold hands! The Temple of Wisdom! Yeah! Torn to oblivion. There is no escape.
Clouds high. The birds call. Wind strike. आज जेंशिन के दिन है नहीं, इसके बाद मैं जाऊंगा वो होंकाई में पे जाऊंगा, वो बात नहीं है। हाँ, वीकली बॉसेस वगैरह रेजिन वगैरह खर्च करना रहता है ना, डेली का कमीशन। Time to go. Papi ya. Inazuma shines eternal. ज़ॉम्बी नहीं है मेरे पास। पे मर जा जब हम पहले बुद्धि बॉसेस वगैरह रेजिन वगैरह तो खर्च कर लें तो थोड़ा सा आर्टिफैक्ट फार्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेजिन बाकी है जो कि सबसे पेनफुल चीज़ है आर्टिफैक्ट फार्मिंग है। एक कंडेंस करना है रेजिन। किसके लिए फार्म कर रहे हैं? सबके लिए।
मिलेगा तब ना। आर्टिफैक्ट किसको नहीं चाहिए बताओ? जितना बेटर है तुम चाहते हो उससे भी बेटर मिल जाए, सब बात हो ही जाए। कितना भी अच्छा आर्टिफैक्ट मिल जाए कभी मन नहीं भरने वाला। तीन कंडेंस है, 3 कंडेंस खत्म करूंगा। राइडन का फार्म कर ली। राइडन के बारे में कुछ मत, उसको डोमेन करते करते लिटरली मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं अब वो डोमेन कुछ दिन तक नहीं करने वाला। मेरा मुझे ये वाला चाहिए यार, एलिमेंट्री मास्टर चाहिए थोड़ा सा, इसके लिए कुकी के लिए। तो एक 3 कंडेंस फार्म करूँगा, देखूँगा अगर कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो छोड़ दो। ये भी फार्म तो इससे पूरा नहीं, इसको फार्म करने जाऊँगा। डैमेज लो है राइडन का। हाँ मेरा राइडन उतना अच्छा नहीं है, क्या करूँ? आर्टिफैक्ट मिलता नहीं है, कैसे करूँगा? वैसे तुम्हारा राइडन कितना डैमेज करता है? There is no escape. क्या मारो? Don't be scared. क्या बोल रहे हो? तुम्हारे राइडन तुम्हें नहीं मारते? The Temple of Wisdom. This may hurt a little. Fallen leaves, adorn my night! Wind strike! I see everything. Yeah. Make yourselves at home. अबे रुक जा, अबे रुक जा। Now you shall perish. Illusion shattered. Go get it, Uruguay. Everyone hold hands. Torn to oblivion. काजुआ भी ले ली। हाँ काजुआ का जब सेकंड मतलब उसको पहला रिटर्न आया था उस टाइम पे मिल सकता हूँ। क्रिएट रख देता हूँ। लग रहा था 1 के डैमेज राइट हैंड होगा सारा, ये तो 88 के देगा। हाँ उतना भी अच्छा नहीं है मेरा राइट हैंड। हाँ मेरे पास तो राइट हैंड नहीं था। कौन सा आर्ट कौन था तुम्हारा? There is no escape. Hey! The Temple of Wisdom. अबे As one with wind and cloud! अबे Shine down. Everyone hold hands. Time to go! Sharing my knowledge. Hey!
Wind strike. Now you shall perish. कभी तो राइट हैंड क्रिएट कर ले यार। डेजर्ट के बाद कुछ नया मैप आया है। हाँ डेजर्ट में नया मैप आया है ना। लिमिटेड मास्टरी एपेक्स एंड देता हूँ। ओके लास्ट है, इसको देखूंगा आर्टिफैक्ट कैसा हो रहा है उसका रोल्स, फिर जाऊंगा होंकाई में। अगर मेरा कुकी को थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर सकता हूँ तो ठीक है। खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया, मतलब थोड़ा सा खा रहा था ऐसे ही। I see everything. Hey, make yourselves at home. Clouds high. The birds come. अबे यार कुछ Go away. ना बेचा लगता नहीं। Illusion shattered. Everyone hold hands. Wind strike. Inazuma shines eternal. There is no escape. I see everything. Don't be scared. नाइडा तो ब्रोकन है यार। हाँ नाइडा बहुत अच्छा है। नाइडा C2 और भी अच्छा है यार। मैं C2 के लिए पुल कर रहा था, C2 नहीं मिला। जोंगली अच्छा नहीं लगता क्या? जोंगली है ही नहीं मेरे पास। मैंने पुल किया था जोंगली जितना भी रिटर्न हुआ है, मुझे मिला ही नहीं कभी जोंगली। ओके क्रिएटेड वाला यही तो चाहिए ना, डिफेंस चाहिए मुझे। क्रिएट डैमेज का करना क्या है? हाँ मेरे पास तो था। अरे सबके पास है, बस मेरे पास ही नहीं है। मेरा इस गेम में उतना कुछ खास लक नहीं है। हाँ दे दो एलिमेंट्री मास्टर भर भर के। ओके कहाँ पे गया हीरो वाला? वाह एलिमेंट्री मास्टर छोड़ कर लिटरली हर एक में गया। इधर तो स्पिन मर रहे हैं। होंकाई में मेरा कुछ नहीं है। एक मिनट, एक और काम रह गया छोटा सा। मैं इस पे पुल कर रहा हूँ। इस पे मेरे पास जितना था मैंने पुल कर दिया। अभी नहीं, कुछ नहीं है पुल करने के लिए। नहीं बन जाएगा। नहीं है भाई मेरे पास कुछ ही।
क्यों तुम्हें चैलेंजेस पसंद नहीं है? थर्टीन के जैसे नेगेट। हाँ वो 13 के नहीं है, क्रिट डैमेज और क्रिट रेट। और मेरी पुल करने से तुम्हारा कैसे दिन बन जाएगा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ डिफेंस ही दे दो भर भर के, खुशी मिलती है। खुशी किस बात की खुशी? ओके मैं अभी जा रहा हूँ हॉन्काई पे। मुझको नहीं मिला, इसको मिला, ठीक है। ओके रुको मैं हॉन्काई चालू करता हूँ। क्या हो गया है? ऑमलेट आर्ट को पता नहीं कैसे। नहीं है प्रो मेरे पास कुछ भी, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर पुल करने के लिए कुछ रहता तो मैं पुल कर देता ना। वो जो तुमने देखा है ना वो गलत देखा है, वो कुछ और था। जैसे वो बोलते हैं हाँ हाँ भाई आईफोन 13 लेके घूम रहे हो भाई, तुम्हें बोलूँगा। हाँ डाउनलोडिंग भाई किस बात की अपडेट आया है? 163 MB का। तेरे पास तो 2 किडनी है क्या? तो हर किसी के पास 2 किडनी होता है, तुम्हारे पास क्या 3 है? 3 है तो मेरा फेंक दे तो। एक है, एक ही इनाम है। आईफोन ने कट नहीं किया। एक इनफ है यार। पता नहीं किस बात का अपडेट आया है, कोई इवेंट वगैरह तो नहीं आ रहा है अभी। तो मैंने अपने एक अंधा और एक अंधा और एक ले लो यार ले लो, अब तुम्हारा टाइम है लेने का। ओके मुझे क्या करना था, मैं कुछ भूल रहा हूँ। ओके मुझे इधर का कमीशन करना है। तुमने कितनी डोनेट करना? हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, मैं डोनेट कर दूंगा। ओके हॉन्काई में सेकंड जो प्लैनेट है ना, इधर पे एक एरिया है जहाँ पे तुम्हें डेली चेस्ट मिलता है। ऐसे 3 दिन तुम्हें चेस्ट मिलेगा, तो तुमने वो वाला कलेक्ट कर रहे हो क्या चेस्ट?
आज 4 स्टार ट्रक ले लो 5 अच्छा है। और मुझे अपना वॉल 4 करना था यार, सॉरी वॉल 6 करना था, मिलिट्री यूनिवर्स था। फ्री चेस्ट किधर? हाँ फ्री चेस्ट मैं कहाँ पे? ऐसे क्लाउड फ्लेयर पे होता होगा, कहाँ पे है? फर्स्ट फ्लोर। समथिंग इधर पे कहीं होगा, इधर पे ये एक छोटा सा एरिया दिख रहा है वाला, इधर पे कहीं होगा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड। ये वाला मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। आईडी बताओ, मैं देखता हूँ ट्राई करके कैसा है तुम्हारा जिला बेटा। फ्रेंड पर है ना, कापनी ऐसे क्या है? Truth of life and death. With the sanctuary is but a vision. Break! फ्रेंड पे इसमें से कोई नहीं है। वॉल 5 क्या तुम्हारा वॉल 5 कर दूँ? इसमें कोई भी नहीं है तुम्हारा। हमारा UID बताओ, मैं देखता हूँ। रुको एक सेकंड, मेरा तुम्हें सही से इधर पे ही होना चाहिए वाला। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। ओके इधर पे ही है, इधर पे है। मैं गलत डायरेक्शन पे तुम्हें बोल रहा था।
आ गया यूआईडी। हाँ यूआईडी मिला है मुझे। ये वाला है क्या जोरो? ये तो लेवल 13। हाँ शायद। हाँ शायद का क्या मतलब? तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारा बर्थडे देख लो ना, उसके बाद तुम्हारे ओसे बायो। लाइट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? ये वाला अच्छा है। क्वांटम तुम्हारे 0 क्वांटम डैमेज बूस्ट की हुई है तुम्हारे पास? तुम्हें कोई क्वांटम डैमेज बूस्ट वाला कुछ नहीं मिला क्या? तुम्हारे पास इसका सिग्नेचर हो है। रेलिक कहाँ पे? हाँ जो मैं बोल रहा था उधर से रेलिक नहीं खत्म। क्या बात कर रहा हो? कहाँ यूज़ कर रहे हो? क्या इधर पे देखो, ये टाइम दिखा रहा हूँ, टाइम टेबल के आज का 0 बचा है। 1 दिन 2 3 दिन शायद से तुम्हें 3 दिन तक तुम्हें चेस्ट मिलेगा। इधर पे तुम्हें एक पजल मिलता है, पजल कंप्लीट करोगे तो ऐसा है कि वो आता है अंदर चेस्ट आता है। सिर्फ एक नहीं 3-4 चेस्ट आता है। लोकेशन फिर से क्लाउड फोर्ट पे जाना है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इधर पे टेलीपोर्ट करना है और इधर पे आना है एक और लास्ट पे, इस वाले एज पे। कैसे बताओ? इधर पे ऑप्शन इस तरफ आना है, इस तरफ। मतलब इधर पे कोई पिन सिस्टम ही नहीं है कि मैं पिन करके तुम्हें बताऊं। ये जो एरिया दिख रहा है ना तुम्हें ब्लैक वाला, जो वाला ब्लैक वाला है उस वाले एरिया का नोट। भाई टीम टीम किसके लिए क्या करना चाहते हो? उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। World 5. It's getting late. Where to now? और एक परमानेंट टीम। हिलर पे क्या है तुम्हारे पास?
नताशा तो Tough pear wrap, song lotus cake, guaranteed delicious. मैं बोलूँगा अपना फोस्टर कैरेक्टर को कभी यूज़ करना सीखो, ठीक है। तुम्हारे पास 5 स्टार कैरेक्टर है, फिर भी मैं बोलूँगा फोस्टर कैरेक्टर भी थोड़ा अगर तुम वर्ल्ड सिमुलेटर यूनिवर्स कर रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा तुम डैमेज से ज़्यादा तुम अपने सर्वाइविलिटी पे फोकस करो, ठीक है। वो जो सीजर है ना, सीजर ने भी अपना वर्ल्ड कंप्लीट किया, सिर्फ वो सर्वाइविलिटी पे फोकस करके, क्योंकि उससे इससे पहले उसने वो हंट और डिस्ट्रक्शन वाला यूज़ करता था, वो वाला बात। देखो टीम तो बहुत है, ठीक है। आप टीम उसी हिसाब से सेलेक्ट करो ना, जैसे कि मैं बोलूँगा हर एक एलिमेंट का तुम कैरेक्टर लेवल और बिल्ड करके रखो, ठीक है। तो जब तुम उसको करने जाओगे ना, तो तुम देखना कि एनिमी के ऊपर कौन सा वीकनेस, मतलब एनिमी को कौन सा एलिमेंट से वीकनेस है, ठीक है। तो उस एलिमेंट को ले लेना। और मेरा देखो, ये मेरा टीम है, अगर मैं इस टीम से अगर मैं किसी को हटाऊंगा ना, तो मैं डैंग हैंग को हटाऊंगा। एक तो जो तुम्हारा वो है ना, रुको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अगर मुझे इधर से किसी को हटाना है तो मैं डैंग हैंग को हटाऊंगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिमुलेटेड यूनिवर्स करने के लिए, ठीक है। डैंग हैंग को हटाऊंगा, एक 5 स्टार में DPS ले लूँगा, कोई भी जो कि अच्छा DPS होगा, ठीक है। चाहे वो उस एलिमेंट को वो ब्रेक करे या ना करे। बाकी का जो मेरा 3 कैरेक्टर है, ये सिर्फ ना पूरा जो मेरा मेरा DPS कैरेक्टर है, इसको मतलब पूरे टीम को सर्वाइव करने में फोकस करेगा। ओके, सेकंड थिंग, मेरा मार्च 7 क्या करता है, मैं अपने मेन कैरेक्टर को शील्ड देता हूँ, ठीक है। और इसका एक जो टैलेंट है, इसके लिए उसका ना फिर टॉन्ट होता है, ठीक है, एनिमी को, जो कि पूरा अटैक जो है कि मेरे पूरे टीममेट को छोड़ के सिर्फ मेरे मेन कैरेक्टर को डैमेज करेगा। और मेरे मेन कैरेक्टर को जितना डैमेज करेगा उतना उसको एक मैग्मा का जो रहता है उसको वो स्टैक होता है, ठीक है। तो वो उसको फ्री में वो मिलता है, इसलिए मेरा मेन कैरेक्टर टैंक है इधर पे, और नताशा हीलर है, और ये मेरा डैंग हैंग DPS है। अगर मुझे इधर पे कोई भी किसी की स्विच करना है ना, तो मैं इसको स्विच कर लूँगा, डैंग हैंग को। और कॉमनली अगर तुम कोई भी तुम यूनिवर्स वर्ल्ड करने जाओ ना, तुम्हें इन चारों में से एक ना एक एलिमेंट तुम्हें उधर पे मिलेगा ही मिलेगा एनिमी के ऊपर, ठीक है। तो बस मैं बोलूँगा मार्च 7 को मैं बोलूँगा अर्ली गेम पे तुम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो ईजीली, बहुत अच्छा है मार्च 7। उसके ऊपर लिटरली उसका टैलेंट लेवल अप करो, स्किल, और उसके ऊपर डिफेंस भर दो, जितना हो सके उतना डिफेंस भर दो। और नताशा को भी लेवल अप कर सकते हो। एक और चीज़ इसका अच्छा है, क्या पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ट्रेसेस, इसका एक टैलेंट है, कहाँ पे क्या, ओके। जब मैं इसका स्किल, अगर मार्च का ऑफिशियल लाइट कौन है, कोई ऑफिशियल लाइट को नहीं चाहिए। मैं नताशा का एक स्किल है, ठीक है। ये वाला स्किल अगर तुम अनलॉक कर सकते हो ना तो अच्छा है। अगर तुम्हारे किसी भी टीममेट के ऊपर डिबफ है ना, ठीक है, तो अगर तुम नताशा का स्किल उस कैरेक्टर के ऊपर यूज़ करोगे ना, तो उस कैरेक्टर को हील करते हैं, ऊपर से उस कैरेक्टर का एक डिबफ जो है वो रिमूव कर देता है। तो खास करके अगर तुम वॉल 5 करने जाओगे ना, तो जो तुम्हारा उधर पे मेन बॉस है ना, जो कफका का एक स्किल है, जो कि तुम्हारे इसको क्या करते हैं, उस स्किल का नाम मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे टीममेट को अटैक करता है, ठीक है। स्किल का नाम क्या है मैं बोल रहा हूँ। तो वो ना, इसको तुम इससे नताशा से तुम उसको रिमूव कर सकते हो। और तुम्हारा मेन कैरेक्टर पूरा टैंक है। और मार्च का एक और चीज़ अच्छा है, क्या बताए, अगर कोई भी तुम्हारे टीममेट का किसी भी कैरेक्टर को अगर शील्ड है ना, तो अगर उस कैरेक्टर को अगर कोई भी एनिमी हिट करता है तो एक फॉलो अप अटैक करता है, ठीक है। और तुम अगर तुम बफ वगैरह सेलेक्ट करोगे ना, तुम्हें ऐसा भी बफ मिलेगा कि तुम्हारा फॉलो अप अटैक का डैमेज इंक्रीज होगा, या फिर जब तुम्हारा कोई कैरेक्टर फॉलो अप अटैक करेगा ना, उसके साथ भी दूसरा भी अटैक करेगा, मतलब दूसरे टाइप का भी डैमेज करेगा वो,
ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे बफ रहता है जो कि तुम्हें सिलेक्ट करना रहता है। तो मेरा रिकमेंड से मैं बोलूँगा तुम मार्च 7 को यूज़ करो, नताशा को यूज़ कर सकते हो। मेरे पास डीपीएस किसको लो? देखो डीपीएस में अगर तुम्हारे पास ज़िला है ना, तो मैं बोलूँगा तुम ज़िला को यूज़ करो, नहीं तो अपना जो वेल्ट है उसको यूज़ करो। कोई भी एक डीपीएस ले लो जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ ये वाला मेरा ना अब बिल्ड है। मैं अभी गया वॉल 6 करके, ओ भाई मुझे भी करना है अपना वॉल 6। मैंने अपना वॉल 5 कंप्लीट कर दिया, अब मैंने वॉल 5 किया। Nice. ठीक है, तो मैं बोलूँगा तुम मार्च 7 को तुम लेवल अप करो। मार्च 7 बहुत अच्छा कैरेक्टर है यार। मुझे तो बहुत हेल्प करता है मार्च 7। आपका हस्बैंड, तुम मार्च 7 को यूज़ करते हो या फिर नहीं? मार्च 40 है यार। मार्च 40 हो या फिर 50 हो, उसे लेवल अप करो और डिफेंस बढ़ दो पूरा, और कुछ नहीं चाहिए। और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर भी डिफेंस बढ़ दो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। डिफेंस कैसे मिलता है? डिफेंस मिलेगा तुम्हें रेलिक्स से, ए टीचर एंड फ्रेंड। मेरा मार्च 7 लेवल 20 पर है। मैं मार्च 7 को बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा कैरेक्टर है यार। या फिर तुम अस्टा को भी यूज़ कर सकते हो। वो जो है ना, उसका अगर तुम बर्स्ट यूज़ करते हो ना, तो तुम्हारे पूरे कैरेक्टर का स्पीड इंक्रीज करता है, जो कि इसमें स्पीड वैल्यू बहुत मैटर करता है। स्पीड इंक्रीज करता है और अटैक बफ भी करता है। कब का टीम कौन सा यूज़ करते हो? मेरे पास जपाट है। हाँ जपाट अच्छा है यार, मुझे पता है। मैंने तो तुमने नहीं देखा क्या मैंने कौन सा टीम से यूज़ किया था? कब का वो वाला इसमें? ओ तुम कब का से बोलते हो यार? थोड़ा सा कंफ्यूज है। कब का अपना नाम चेंज करो। टीम क्या टीम? मेरा टीम मैंने यही टीम यूज़ किया था, उसका पता नहीं। ज़िला में एमसी फायर, नताशा, आस्टा। और बोला ना कि भाई 4 स्टार कैरेक्टर है, इसमें भी बहुत अच्छा 4 स्टार स्टार्टर जो 4 स्टार कैरेक्टर है। पता नहीं मैं अगर वॉल 6 करने जाऊंगा तो कैसा होगा मेरे साथ।
मैंने ट्राई ही नहीं किया। सबसे पहले ना मुझे अपना रेलिक पूरा लेवल 12 करना पड़ेगा हर एक पे। हाँ, सर्च फॉर टारगेट कितना? या कितना हार्ड है वॉल 6? वॉल 5 में कौन सा पद लिया था? मैं प्रिजर्वेशन लिया था। मैं सर्वाइवल पे फोकस किया था, ना कि डैमेज पे। मैं फुल ऑन सर्वाइव करना लास्ट में जाके, बिल्कुल लास्ट में जाके, जब उसका कपका का जब हंट लेके हट रहा मैं ऐसा फोटो ओके। मैं तो हमेशा बोलते यार सर्वाइव, अगर तुम सर्वाइव कर पाए ना तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तुम इजीली तुम डैमेज कर सकते हो। वॉल 6 इजी है, पर बॉस फाइट में सेकंड फेज में पूरा उड़ा दिया। कौन सा वाला पाथ लिया था? I've no interest in conflict. My turn! Phew! Gotta try hard some. Watch this awesome move! This time. Get! Time for a shot. Fighting is meaningless. The truth of life and death. Reveal the sanctuary is but a vision. Break! Try that again. आपका हस्बैंड कौन सा वाला पाथ यूज किया था? Lance ablaze. Lance! Forward! Tough luck running into me. Lance at the ready. पहले हीलिंग वाला लिया था क्योंकि लोग बोल रहे हैं वो ओपी है, पर बहुत हारने के बाद हंड वाले पद से क्लियर किया। मुझे भी करना है अपना वॉल से। कहाँ का फोटो लेना है? अबे कहाँ का फोटो लेना है इसका? हंट इज ओपी मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे सरवाइव करना है ना ज़्यादा से ज़्यादा। क्या लंबा क्वेस्ट है यार। This will strengthen our position. मैं एक ही यूज कर रहा हूँ पता नहीं। You are overthinking this. कब का
ये टीम लेके वॉल 5 पे कौन सा पाथ लेना चाहिए? तुम मेरे से पूछ रहे हो मुझे लिटरली कब का, और लिटरली वॉल 5 में कब का ही है यार, और इसको कब का पहले जाके अपना नाम चेंज करके हुआ यार। ओके फाइनली यार कंप्लीट हो गया। हीलिंग वाला पता नहीं नाम क्या था, पर वो हील करता है। कब को मारने के लिए कब से पूछ रहा हूँ। इंक्रीज ब्रेक इफेक्ट। अरे हाँ कब का था जो ईशान मुझे हर बार बार बोल रहा है कि पुल करो। मैंने उसको बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है पुल करने के लिए। सबको पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वॉल 6 में सर्वाइव नहीं होता। मैंने ट्राई किया था पर कोकोलिया ने न्यूक कर दिया टीम को। कोकोलिया वो उसका क्या वीकली बॉस वाले फॉर्म पे आता है या फिर मतलब ऐसे उसका जो नॉर्मल फॉर्म पे आता है वो? मुझे ट्रेसेस नॉर्मल वाला है। ओ तो फिर ठीक है, तो फिर उतना कुछ हार्ड नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। ओके मुझे इसका लेवल अप करना है। यार ये मटेरियल फार्मिंग ना यार इतना बेकार लगता है ना कभी कभी, क्या बताऊँ। आप कौन का किसका? आई डोंट अंडरस्टैंड। फेज 1 इजी है पर फेज 2 में प्रोनिया प्लस कोकोलिया प्लस न्यू प्लस आइस विडर खत्म। उसमें प्रोनिया भी आता है क्या उसके साथ, कोकोलिया के साथ? फेज 2 में मजाक कर लो यार। ओके कोई मुझे अपना वो देगा? ओके 0 का जिला यूज करने के लिए बोल रहा था ना। लेट्स गो। लेट्स सी तुम्हारा गॉड जिला कितना अच्छा है। Don't mess with me. फेज 2 में I'll end your misery. Tough luck running into me. Here. मेरा तुम्हारा ही लोग। Not a scratch. Try that again. I'm on guard.
into misery. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. और क्यों नहीं कर रहा है यार? My turn. Gotta try hard some. Watch this awesome move. Try that again. It's time. क्या करेगा ये? अपना वो क्या कर रहे हो? आप ही यूज करता हूँ। Lance ablaze. Lance. Forward. पोस्टर रिलीजरी कितना मिलता है? इसे कहाँ यूज करता है? All in your misery. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. चलो एटलीस्ट क्रिट तो किया जाए। Who's next? Tough luck running into me. You can't run. पूरा अच्छा करने की कोशिश की था। Try that again. कोई बात नहीं, वो आने के करने के बाद वो टाइम लगता है उसको, मतलब वो जो अपडेट होने में। ठीक है। I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. मेरा एक Illusions of the past. और क्या क्या निकालोगे गलती से? My turn. You can't run. Not a scratch. Try that again. Lance at the ready. What a headache. यार मुझे अल्टीमेट यूज करना। Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. सोच रहा था सेव करूँगा आने वाले 5 स्टार के लिए। 160 का जेट इसमें। भाई मैंने सोचा 10 पूल से किया है तो पर गलती से हो गया। और गलती से और क्या क्या होगा बताओ? तुम बोल रहे थे जिला से रिमूव कर दिया, मैं देख इसको अपडेट होने में टाइम लगता है बहुत। सच में रिमूव है। बहुत कुछ। मार्च तुरंत ये वाला क्या? इफेक्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज, ये भी करना है। आइस डैमेज इंक्रीज बाय 3.2%। कैरेक्टर चाहिए था, गलती से सिग्नेचर लाइट को ले लिया। किसका? जिला का। वेल्ट का। चलो ये भी सही। ओके क्या सही है? इस टाइप का चैट मत करो, वो ना वो कर देता है, हाइड कर देता है। ठीक है, तुम्हें कभी नहीं दिखेगा।
मैं हूँ। ओके, मुझे ये बार फॉलो अप अटैक। मुझे कुछ कैरेक्टर को लेवल अप भी करना है। ये बारा हार्ट हो गया। सागर भी है। 5 मिनट आया काम करके। हाँ ठीक है। मुझे ना सबसे पहले इसका डेली लेवल अप करके फिर मुझे जाना पड़ेगा। ज़्यादा मत करना ब्रो। क्या लेवल अप? हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तुम किसे बोल रहे हो? डिफरेंस है। जाने वाला हूँ क्या नहीं। बस जाने वाला है क्या? हाँ जा रहा। गुड लक। किस बात की गुड लक दे दो उसे। Okay, 1300 अरे भाई तू कुछ हमारे में मत करो यार। नहीं वो मैंने कर दिया पहले। मुझे कोई पोस्टर दिखे। एचवी मुझे अगर डिफरेंस मिलता ना। डैमेज wound damage was physical defense इसमें कुछ है कैमरा सेट होना के लिए। डिफेंस ओके है। लोगों का अच्छे रेडिक्स चाहिए और इस भाई को डिफेंस चाहिए। यप आई नीड ए डिफेंस। मेरे पास डैमेज बोनस भर भर के पड़ा है जो कि मुझे चाहिए नहीं। अटैक परसेंट चलेगा। ये वाला भी इन्हांस करना है। मुझे क्रिट डैमेज चाहिए पर मिलता नहीं है। क्रिट डैमेज का करना क्या है? कोई काम नहीं है क्रिट डैमेज का, पता है?
HP मुझे नहीं चाहिए ब्रो क्रिट रेट 33% क्रिट रेट हो गया ओके ले ले मेरे पास ना कोई डिफेंस बूट नहीं है ओके अब से फुल टाइम जीना ट्राई करता हूँ आइस डैमेज बूस्ट मैं सोच रहा हूँ इसको आइस डैमेज बूस्ट दे दूँ या फिर डिफेंस दे दूँ मेरे पास और कोई 4 स्टार डिफेंस नहीं है यार ये वाला है आइस डैमेज बूस्ट ब्रेक इफेक्ट ये क्या करता है डिफेंस बुढ़ो में भी थोड़ा से काम करके आया हूँ हाँ ठीक है 8 भी चाहिए मुझे Let's see how hard World 6.
हाकने का वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड 6 वो बात नहीं है मुझे स्टार्टिंग में आपको वो बफ क्यों नहीं मिल रहा मुझे पता नहीं मुझे बफ का क्या हो गया एक स्टार्टिंग वाला बफ रहता है ना मुझे मिल नहीं रहा उधर पे वर्ल्ड फिक्स पर देखो इधर पे मुझे उसने डायरेक्ट घुसा दिया फाइनलाइज ये देखो क्या प्रॉब्लम क्या है इसका को नहीं देते गुड लक या विश मी लक तो तुमने हाँ वो बात भी सही है हाँ बोलो preservation shield character receive reduced damage when entering battle all character gain shield ये वाला चाहिए फुल मारते मेरे को बूस्ट नहीं उसमें कुछ नहीं मिलता है दिस इज अ स्कैम यू नो क्या करेगा रख के ऐसी लगी C5 हो जाए इतने नहीं है पूरा मेरे पास वन कैरेक्टर इसमें ओके दो है प्रिजर्वेशन वन कैरेक्टर रिसीव शीट देयर इज ए स्मॉल चांस यू वांट टीफ ऑफ कंप्लीट ओके ये वाला चाहिए जितना प्रिजर्वेशन मिलेगा उतना डिफेंस मेरा इंक्रीज होगा अबे रुक जा मैं आ रहा हूँ क्या करूँ मैं उसका
ランス戦闘準備。おやすみ。後悔しても遅い。生死虚実、一年の同点研究、超無一角。हाँ सिलेबस से फाइल मिल जाएगी अरे प्रो मैं कब से बोल रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है पुल करने के लिए रिजर्वेशन प्लीज ओके नो रिजर्वेशन कैरेक्टर इंक्रीज reservation let's go shield character have an increased crit rate let's goこれで万全だ。孫悟の意志を。争いに意味はない。うちなかなかやるじゃん。Bangun bisa nonton. たまには真面目にうちのとっておきをくらえ。手の施しようがないわね。इधर कोऑप मोड कब आएगा पता नहीं मुझे नहीं लगता कभी कोऑप मोड आने वाला है इसका生死虚実、移動点原型、超無一角。逃がさない。ついてないね。俺が守る。इधर ऊपर इसका लाइव देखने के लिए आज ही वाईफाई डाला हूँ घर पे थैंक यू प्रो लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे इधर पे मुझे मिल नहीं रहा है जो मुझे ब्लेसिंग चाहिए रिजर्वेशन ओके ब्रो कुछ नहीं है मेरे पास これで万全だ。孫悟の意志を。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。騒ぎを起こしたくはない。 तुम लोग यार मुझे गिफ्ट करो वाईफाई うちなかなかやるじゃん。チャンスだ。悪い子ね。おやすみ。うちなかなかやるじゃん。मेरे घर पे वाईफाई डालना पर घर मेरा नहीं है वाईफाई戦闘を長引かせすぎた。お注射の時間よ。ありがとう。生死虚実、同点原型、超無一角。टॉयलेट पे आके नेट चला अबे क्या इनका प्रॉब्लम क्या है फॉल ऑफ अटैक
देखता हूँ इलाइट बॉस कैसा रहता है। चलो ये भी कोई बात नहीं, मेरे नाम से मार क्या। अरे कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कब से इतना चिल्लाऊं। मरता नहीं है यार एनिमी। मर जाओ एनिमी। कितना टाइम लेगा यार मारने के लिए? मजाक कर रहे हो यार।
मेरा टीपीएस बढ़ने वाला है। इसलिए मैंने हंट वाले पास दिया था, डैमेज इसमें ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लांस 戦闘準備 शिट सॉरी, मुझे लगा मैंने गलती से दूसरे लेवल अप कर दिया। मेरे मेन कैरेक्टर को जितना चाहिए उतना मारते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, and the character is tackle a special shield. Increase the weakness, break destruction, follow battle. Let's go. Okay. नया एपिसोड आया नहीं था, देखने जा रहा हूँ कब से आएगा। मेरा कोई टाइम था बहुत अच्छा यार एनीमे देख मुझे काफ़ी तो हो गए। मैं थोड़ा थोड़ा देखते रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। देखते भाई अच्छे एनीमे। कौन सा एनीमे? एनीमे का नाम तो बताओ। ओके 180 है एटलीस्ट। मैं बस मंगा पढ़ता हूँ और लाइफ नॉवल अबे कहाँ भाग रहा है? रुक जा। चलो हाँ ठीक है। और तुम पर वेबटून मैंने बस मैंने एक ही पढ़ा था इसका सोलो लेवलिंग का।
विंड ब्रेकर बढ़िया नहीं 生死虚実一年のマナー同点元気超無一角 सोलो लेवलिंग अच्छा है लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां भी हैं お注射の時間よ後悔しても遅い うちなかなかやるじゃん मैं अभी एनिमी बहुत टेंकी हो गया 俺が守る 逃がさない कुछ ज्यादा ही डैमेज कर रहे हैं अभी यार おやすみ मजाक कर रहे हो यार 生死虚実一年の魔導天元気超無 लिटरली वो साइड वाले वो दोनों लिटरली अटैक बूस्ट कर रहे हैं たまには真面目にうちのとっておきをくらい ランス戦闘準備 हाँ पढ़ा है सबने सब कुछ पढ़ा है मैंने बस कुछ नहीं पढ़ा है 争いに意味はない やり先に火を炎の槍を断ち切れ おやすみうちなかなかやるじゃん悪い子ね平気よ逃がさない騒ぎを起こしたくはない生死虚実一年のマナリ ओके उसको अपने को सेल दे दिया था मुझे लगा था たまには真面目に行こううちのとっておきをくらい 俺が守る炎の槍を断ち切れランス戦闘準備 おやすみ殴ったね 騒ぎを起こしたくはない 逃がさないうちの出番 チャンスだ ओके तुम लोग यार इसकी बात करते रहो तब तक मैं ना 生死虚実一年同点元気超無一角 इसको मार देता हूँ 殴ったね 争いに意味はない俺が守る槍先に火を炎の槍を断ち切れ अच्छा おやすみ प्लीज यार मर जा मर जा यार मर जा うちの出番たまには真面目に行こううちのとっておきをくらい お注射の時間よ ओ भाग गया यार ये तो गलत बात है मैंने इतना टाइम उससे
फाइट करने में निकाला यार, वो भाग गया। सिंगल हो क्या? हाँ सिंगल हूँ भाई, कोई पूछता भी नहीं है हमसे। डिस्ट्रक्शन and character launch full attack their defense increasing. The character deals with character movements in the power of the train. After having the HP destroyed, the character defense increase. Okay. ठीक है। ब्रो काचा के सिंगल के लिए होता है। Apply shield to all character after using part of resonance. Part of resonance resolution archaic. Skill hit 9. Good night. Good night. टाइम कितना हुआ है? मैं 11 बजे तक हूँ, देखता हूँ तब तक कितना तक जा सकता हूँ। 生死虚実一年のマナリ同点元気超無一角うちなかなかやるじゃん कब का मुझे हक कर रही है सबसे मैं भी जा रहा हूँ तो हाँ ठीक है ランス戦闘準備で逃がさない悪い子ねうちなかなかやるじゃん手の施しようがないわねおやすみ生死虚実同点元気超無一角この程度殴ったね手の施しようがない逃がさないAnd character input to weakness break target character field.
真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。生死虚実一年のまなり同点剣家超無一角後悔しても遅い。うちなかなかやるじゃん。リュウ俺が守る。殴ったね。悪い子ね。おやすみ。逃がさない。程度か。うちなかなかやるじゃん。生死虚実一年の同点剣家超無一角逃がさない。ついてないね。チャンスだ。おやすみ。शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मेरा दोस्त फ्री फायर खेलता रहता है, वो गाचा गेम्स नहीं खेलता। पहले बात तो थैंक यू यार शेयर कर बोलने के लिए बस। One character launch follow-up attack, they restore HP. One character also restore an ally's HP. Both enemies attack increase every time in instant. Let's see ये वाला कैसे होता है। 前者来たらずभाई लेवल 62 का एनिमी है। これで万全だ。孫悟の意志を。Let's see कैसा होता है वाला। 下手に動くな。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。生死虚実移動点剣家超無一角。たまには真面目に行こう。うちのとっておきをくらえ。बहुत टेंकी है यार ये वाला एनिमी। 下手に動くな。争いに意味はない。Game over. I think that's not. 俺が守る。お注射の時間。おやすみ。逃がさない。Defense reduction. 生死虚実同点剣家。 मैं पूरा अपने कैरेक्टर को शील्ड देके भर दूंगा। 悪い子ね。たまには真面目に行こう。うちのとっておきをくらえ。お注射の時間よ。平気よ。殴ったね。ランス戦闘準備。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。अब यार इतना जल्दी कैसे शील्ड। 争いに意味はない。
54,000 huge attack boost. मजाक कर रहे हैं. इसको शीट देना है. おやすみ。生死虚実同点元気超無一角。俺が守る。手の施しようがないわね。真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。槍先に火を हंसो मत यार. उसने लिटरली वन शॉट कर दिया मेरे इसको. मुझे उधर पे लगा था कि यार वो बहुत खतरनाक बनने वाला है क्योंकि उसने ह्यूज अटैक बूस्ट लिया था यार. मजाक नहीं कर रहा वो बहुत. और मैं फिर भी इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि इधर पे ना एक ऑप्शन है तो कैरेक्टर को रिवाइव करने का. डिफरेंट रिडक्शन. इसने मेरा डीपीएस कैरेक्टर को डाउन कर दिया. अबे मेरे मेन कैरेक्टर को मारे. लेट्स सी कितना हैंडल कर सकता है मेरा मेन कैरेक्टर. 槍先に火を炎の槍を断ち切れ間に合ったよねほんの気持ちよ気にしないでありがとううちのとっておきをくらえ俺が守る 悪い子ねお薬の時間よ助かったありがとう平気よ間に合ったよねほんの気持ちよ気にしないで助かったたまには真面目に行こっかうちのとっておきをくらえランス戦闘準備槍先に火を炎の槍を断ち切れ手の施しようがないわねありがとう逃がさないいや大丈夫あっち行って大丈夫
Bit. No, my God. ओके ऐसे वाला पार्ट मेरा नहीं होने वाला मैं मरने वाला हूँ लेट्स गो ओके in combat and fine line हाँ मैं भी जा रहा हूँ